Hello, my name is Vikas Agrawal and today we are going to discuss a chapter of class 9, that is motion. According to the curriculum of class 9 of this chapter, we are having few topics. So the topics are distance and displacement, velocity and speed, uniform and non-uniform motion along a straight line, acceleration, distance time and velocity time graph, equation of motion by graphical method, elementary idea of uniform circular motion. So dear students, today you will be able to learn about all these things after this lecture. That means after completing this chapter, you will be able to solve the questions based on all these 7 topics and related to that. One by one, we are going to discuss that topic. Okay, I hope you are ready. Yes or no? Okay, that's good. Let's see. First of all, we are having a topic distance and displacement. But before that, the most of the student asked me, sir, what is motion all about? This is the very first question the student might have asked in the classroom. So what is motion? Motion क्या है? ऐसा क्या होता है मोशन के अंदर कि जिसको हम पढ़ने के लिए हमने उसको जरूरी समझा और इतने सारे टॉपिक हमारे सामने आ चुके हैं. So let us discuss the introduction of this chapter. What is motion all about? So every time when we discuss about the motion, there should be a certain imagination into our mind, like something is going on or changing its place. Definitely you are right. Exactly, you are getting the same thing. For example, you are standing at your bus stop. You are going to the school in the morning, and suddenly the bus of some other school is passing by at the road. What is going to be happen? You will see the position of the bus will change from point to point. That means here is your bus. It is going along the road, and after some time, the position of the bus reaches from point A to point B, and you are standing over here. This is you. So did you notice something? That means after certain time, recall this term, after certain time, the position of the body changes from A to B. And this is what motion is. Whenever the body is changing its position at a given time, that is called motion. But with a reference point. So what is the reference point that we are going to discuss very soon? So motion says an object is said to be in motion. An object is said to be in motion if it changes its position from one point to another with a reference point. This is what motion is. Okay, what is rest in that case? If an object is moving, if the brakes are applied, the car or the bus, now it is not moving, अब वो रेस्ट पोजीशन पर है. दैट मीन्स बॉडी कहीं भी नहीं जा रही. इस केस में वी आर हैविंग अ टर्म दैट इज रेस्ट. रेस्ट क्या है? क्या मैं इसका अपोजिट बोल सकता हूं? क्या मैं इसको कॉन्ट्रेरी अपोजिट नेगेटिव टर्म में ले सकता हूं? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग और इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. यस, if the object is not changing its position with a reference point from one point to another, is said to be in rest. Yes, you are perfectly right. You are getting exactly right. An object is said to be in rest if it does not changes its position from
point A to point B or one point to another is said to be in rest if it does not change its position from point A to point B. This is motion and rest. We were discussing a term. This thing always should come into the student mind. सर ये reference frame या frame of reference जो आप बार बार use कर रहे हैं ये क्या है? Okay, let us discuss that. Let us take an example to understand what is frame of reference. Have you ever been gone somewhere in a train? क्या आप ट्रेन में बैठकर कहीं गए हैं? You know the very interesting thing what happens when you are sitting in a train and the train is moving like that. You are going somewhere and somebody asks you, कौन सा स्टेशन आ चुका है? Then someone says, दिल्ली आने वाला है. दिल्ली आने वाला है. भोपाल आने वाला है. Are you getting this? लखनऊ जा चुका. Exactly in a practical way, imagine क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दिल्ली आ जाएगा खुद से, कि लखनऊ आ जाएगा खुद से, या भोपाल चला जाएगा? नहीं. होता क्या है, मूव हम करते हैं ट्रेन के अंदर, बट हमको क्या लगता है कि स्टेशन खुद हम तक चलकर आएगा. दिस इज व्हाट वी थिंक, बट एक्चुअली इट इज नॉट. क्यों कहा हमने? बिकॉज ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्योंकि हमने ट्रेन के अंदर बैठकर ये ऑब्जर्व किया कि एक पेड़ या कई सारे पेड़, प्लॉट, फील्ड्स, फार्मर्स जो पीछे की तरफ निकल के चलेगा, हम कहते हैं खेत पीछे चला गया. खेत कभी पीछे जा सकता है क्या? नेवर, कभी नहीं जाएगा वो पीछे. बट हमको ऐसा लगता है, हम कहते हैं कि पेड़ पीछे की तरफ जा चुका है. बट एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, हम ट्रेन से आगे की तरफ जा रहे हैं. फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमने ट्रेन से बैठकर पेड़ देखा, पेड़ वहीं था, पर हमको क्या लगा कि पेड़ पीछे गया. लेकिन अगर पेड़ के पास में अगर आप खड़े होते तो आपको रियलिटी पता चलती, लाइक द ट्रेन इज मूविंग फ्रॉम इट्स पोजीशन. यस, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट फ्रेम ऑफ रेफरेंस. आप किस फ्रेम से देखते हैं? क्या आप ट्रेन के अंदर देखते हैं या ट्रेन से बाहर होकर चीजों को ऑब्जर्व करते हैं? ये जो रेफरेंस लिया गया, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जब आप चीजों को देखते हैं तो आपको समझ में आता है. जैसे एग्जाम्पल, आप डेली हम सनराइज सनसेट देखते हैं, हमको लगता है ऐसा कि सूरज अपना ईस्ट से निकला और वेस्ट में सेट हो गया. दिस इज व्हाट वी सी, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट. बट एग्जैक्टली इट इज नॉट हैपनिंग. The position of the sun is stationary. The earth is rotating from west to east, and this is why the sun seems to be moving from east to west. Yes or no? Exactly. This is what I'm saying. This is what the frame of reference is. इसका definition देख लेते हैं. It's a very another thing. It is another object with respect to which we compare the object's position. We compare the object's position. I hope you are getting the basic idea or the introduction of this chapter. Okay.